सो लास्ट टाइम हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की एनालिसिस की थी और डिफरेंट पैरामीटर्स हमने निकाले थे। तीन तरह के गेन्स हमने डेवलप किए थे, वी नॉट, ए वी, जी वी। इनपुट रेजिस्टेंस आर इन हमने डिटरमिन की थी और आउटपुट रेजिस्टेंस कैपिटल आर नॉट हमने देखी थी। सिमिलर एनालिसिस प्रोसीजर अभी हम अप्लाई करते हैं ऑन अ वेरिएशन ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर called common emitter amplifier with an emitter resistance. So common emitter amplifier with an emitter resistance. So इस पे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करके देखते हैं। So अभी हम जस्ट AC इक्विवेलेंट सर्किट्स पे फोकस कर रहे हैं। दिस इज एन AC इक्विवेलेंट सर्किट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई DC बायसिंग शो नहीं की गई। एंड सिंस फॉर BJT एम्पलीफायर the transistor has to be biased in active mode, so that means this must be AC equivalent circuit. So let's analyze this circuit and see कि इस केस में हमें किस तरह के पैरामीटर्स मिलते हैं। So since AC equivalent circuit हमें given है, so the next step is to decide on the model. इसमें आप देख सकते हैं कि emitter terminal is not directly grounded, so our preference would be the T model. So T model हम ड्रॉ कर लेते हैं, either voltage controlled current source form or current controlled current source form, whichever you prefer may be used. तो ये आपके पास आ गया T model। अभी यहाँ पर टू सेव सम टाइम मैं यहाँ पर अर्ली इफेक्ट के बगैर कर रहा हूँ सॉल्व, लेकिन जिस तरह हमने पहले बात की है कि अर्ली इफेक्ट इज बाय डिफ़ॉल्ट वी डू इंक्लूड अर्ली इफेक्ट, और लास्ट वीक हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी अर्ली इफेक्ट के साथ भी हमने देखा था। सो एज अ होमवर्क आपने इन तमाम टोपोलॉजीज को अर्ली इफेक्ट के साथ सॉल्व करके देखने। सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद अर्ली इफेक्ट यू जस्ट हैव टू प्लेस अनदर रेजिस्टर स्मॉल आर नॉट बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर टर्मिनल्स। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा और प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिएगा विद अर्ली इफेक्ट। सो अभी लेक्चर के दौरान हम इस प्रॉब्लम को विदाउट अर्ली इफेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। सो अब हम टर्मिनल पे टर्मिनल चीज़ें शिफ्ट करते जा रहे हैं। एमीटर के ऊपर आपके पास RE था, यहाँ पर मैंने RE प्लेस कर दिया। कलेक्टर के ऊपर आपके पास RC इन पैरेलल विद RL है, वो हमने प्लेस कर दिया। बेस के ऊपर आपके पास R सिग्नल है और आपके पास V सिग्नल है। आउटपुट इज डिफाइंड एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनपुट वोल्टेज इज डिफाइंड एट द बेस टर्मिनल अगेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। VI यहाँ पर है। सो लेट्स स्टार्ट बाय डिटरमिनिंग Rin। तो Rin के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार है? Rin के लिए यू रिमूव द प्रैक्टिकल सिग्नल सोर्स कंप्राइजिंग ऑफ V sig R sig एंड इंस्टेड अप्लाई अ टेस्ट सोर्स। तो यहाँ पर हमने R सिग्नल V सिग्नल को रिमूव कर देना है और उसकी जगह एक टेस्ट सोर्स अप्लाई करना है जिसका कोई भी नाम रखा जा सकता है, बट सिंस इस वोल्टेज को ऑलरेडी एक नाम दिया गया VI, so there is no point of renaming this, तो इसको हम VI कह देते हैं। और इनपुट करंट In हमने निकालना है, so VI divided by In। So let's apply KCL at the base node। So KCL at base node, we have two currents entering the node, In and alpha IE are the two currents entering the node and one current exiting the node. So In is equal to IE 1 minus alpha। 1 minus alpha को further simplify किया जा सकता है, alpha is beta by beta plus 1, so beta plus 1 minus beta divided by beta plus 1, so it is equal to 1 by beta plus 1। So let's make this substitution। 1 minus alpha को substitute कर देते हैं 1 by beta plus 1, IE divided by beta plus 1, तो ये आपके पास In आ गया। So In को हमने VI के टर्म्स में लिखना है ताकि हम Rin निकाल सकें। तो VI के टर्म्स में कैसे निकाला जा सकता है? IE को यहाँ पर देखिए, IE is the current through this resistor small re and also IE is the current through this capital
RE as well, क्योंकि दोनों resistors series में connected हैं. So by Ohm's law, IE is equal to VI. VI is the voltage across this series combination. इस पूरी series combination के cross VI voltage है. So IE is VI divided by RE plus capital RE. So let's make this substitution. तो I in आ गया आपके पास VI divided by beta plus 1 times small re plus capital RE. Or in other words, R in, which is equal to VI divided by I in, is equal to beta plus 1 times small re plus capital RE. So this is the value of the input resistance that we get here. अब इसको जरा कंपेयर कीजिए पिछली टोपोलॉजी के साथ जो प्योर कॉमन एमीटर टोपोलॉजी थी. तो व्हाट वी कैन सी इज कि जो कॉमन एमीटर टोपोलॉजी थी इसमें कैपिटल आर ई वाज इक्वल टू 0. सो कॉमन एमीटर के केस में आर इन फॉर कॉमन एमीटर का मतलब ये था कि कैपिटल आर ई को 0 पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 टाइम्स स्मॉल आर ई विच बाय डेफिनेशन इज आर पाई. ये वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी. सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमने आर इन को इम्प्रूव कर लिए बाय चूजिंग अ सुटेबल वैल्यू ऑफ कैपिटल आर ई. कैपिटल आर इन इज लार्जर देन दैट अचीव्ड इन कॉमन एमीटर. रिकॉल करें फॉर अ वोल्टेज एम्पलीफायर आर इन जितना बड़ा हो उतना बेहतर है. आर इन की आइडियल वैल्यू इज इन्फिनिटी. So capital R in जितना large है, that's better for you. So what we are saying is कि in this particular topology, common emitter with an emitter resistance, you have managed to achieve a larger value of input resistance. So let's now determine the gain and see कि ये input resistance तो हमने larger achieve की है, लेकिन क्या कोई हमने compromise की है? तो we'll see कि we have achieved larger input resistance at the expense of gain. तो इनपुट रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाएंगे तो गेन स्मॉलर हो जाएगा. सो यू अचीव लार्जर इनपुट रेजिस्टेंस एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर गेन. सो लेट्स डिटरमिन एन एक्सप्रेशन फॉर द गेन. लेट्स स्टार्ट बाय अप्लाइंग केसीएल. सो AB को निकालना है हमने. AB इज V out over VI and let's start by applying KCL at this collector node. So there are two currents here, both exiting the node. So this means alpha IE plus V out over RC in parallel with RL must be equal to 0. This current is exiting the node downwards. This current is also exiting the node because of Ohm's law and passive sign convention. It is in the downwards direction. So we have this relation. So इसको हम rewrite कर लेते हैं. V out is equal to minus alpha IE RC in parallel with RL. अब चूंकि हमें रिलेशन चाहिए V out की VI के साथ, तभी आपके पास गेन आएगा ना AV. सो IE को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. बाय ओम्स लॉ वी कैन मेक दिस सब्स्टिट्यूशन. IE इज VI डिवाइडेड बाय RE प्लस कैपिटल RE. सो माइनस अल्फा VI RC इन पैरेलल विद RL होल डिवाइडेड बाय RE प्लस कैपिटल RE. So the gain AV is V out over VI, which is equal to minus alpha RC in parallel with RL whole divided by RE plus capital RE. यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन एमीटर का अगर आप केस कंसीडर करें, यानी कैपिटल RE को अगर आप 0 सेट कर दें तो AV will be larger. So what we are saying is we are achieving larger value of Rin for this common emitter with RE topology, but smaller value of AV for this common emitter with RE topology. So common emitter with RE gives you additional flexibility in terms of selecting Rin at the expense of gain. So you can achieve larger Rin, but you have to compromise the gain AV. तो gain AV को compromise करके आपको जितनी भी larger Rin चाहिए वो achieve की जा सकती है. So this topology does provide us with some additional flexibility. AV नॉट आपके पास क्या आ जाएगा? AV नॉट इज जस्ट AB with RL substituted as infinity. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RL is appearing in parallel with RC. So infinity in parallel with RC must be equal to RC because infinity is an open circuit. तो open circuit अगर आप parallel में connect कर दें किसी resistor RC के, तो the resulting value of the resistor will be just RC.
So this is equal to minus alpha RC divided by RE plus capital RE. GV आपने निकालना है, तो GV is just V out over V signal, which can be written as VI over V signal times V out over VI. जिस तरह हम पहले भी देख चुके हैं कि VI over V signal is just a voltage divider, Rn divided by Rn plus R signal, and V out over VI is just AV. So make the substitution here. Rin is beta plus 1 times small re plus capital Re. So beta plus 1 times small re plus capital Re plus R signal multiply by AV. तो AV की वैल्यू को भी यहाँ पर आप पुट कर दें, तो यू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर GV. तो यहाँ पर हमने देखा, हमने Rin की वैल्यू निकाली जो कि हमें लार्ज मिली, AV की वैल्यू हमने निकाली, AV नॉट की निकाली, GV की निकाली, and we observed that all these gains are negative, which is a characteristic of common emitter topology. And since this common emitter with RE is sort of a variation of common emitter topology, तो यहाँ पर भी आपको gains negative मिल रहे हैं. And also we have observed कि Rin can be made as large as needed by compromising on the gain. तो Rin को जितना लार्ज आप करते जाएंगे उतना गेन कम होता जाएगा. सो आखिरी पैरामीटर हमारा रह गया विच इज कैपिटल R नॉट. सो लेट मी रीड्रॉ द सर्किट हियर. सो ये हमने इसका टी मॉडल बना लिया. दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमीटर. अब हम टर्मिनल बाय टर्मिनल यहाँ पर चीज़ें शिफ्ट करते जाते हैं. वी हैव RC, we have RL, we have capital RE at the emitter, and we have some test source here जिसका हम VI का नाम दे रहे हैं. So capital R नॉट निकालने का क्या तरीकाकार है? You will apply a test source instead of RL. तो RL जो load resistor है, you will remove that, and instead of RL you will apply a test source Vx and determine its current, and also you will suppress VI. VI को भी अपने 0 सेट कर देंगे. So remove RL, RL को हटा दें, RL की जगह पे कोई टेस्ट सोर्स लगा दें. Let's call it Vx. Determine the current of the test source, Ix हम निकालना चाह रहे हैं, and also suppress VI. VI को अपने 0 पे सेट करना है, तो VI is equal to 0. So ये अब हमारे पास सर्किट आ गए. अब देखें अगर VI आपके पास 0 है तो दैट मीन्स दिस नोड इज एट 0 वोल्टेज. तो ये नोड 0 वोल्टेज है, ये ऑलरेडी 0 वोल्टेज है. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ IE? IE इज इक्वल टू 0 minus 0 divided by small re plus capital RE, which must be equal to 0. So if IE is equal to 0, then alpha IE must also be equal to 0. So this is also equal to 0. So what we are saying is, if we have this dependent source whose current is 0, so if the current of this dependent source is 0, so it is just equivalent to saying that it is acting as an open circuit in this particular circuit topology, and you are left with just this circuit to determine capital R naught. So capital R naught के point of view से आपके पास just ये circuit है, and that means capital R naught must be equal to capital RC. So ये हमने चौथा पैरामीटर पे निकाल लिया. तो हम अब Rin निकाल चुके हैं, हम AB नॉट, AB एंड GV निकाल चुके हैं, एंड कैपिटल R नॉट हम भी निकाल चुके हैं फॉर दिस कॉमन एमीटर विद एमीटर रेजिस्टेंस टोपोलॉजी. तो यहाँ पर जिस तरह आपने देखा है कि ये रेजिस्टेंस हमारे पास आई है, Rin इज बीटा प्लस 1 टाइम्स स्मॉल re प्लस कैपिटल Re. So this is called resistance reflection rule,
and the rule states that the resistance looking into the base terminal is beta plus 1 times the resistance in the emitter terminal. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इस सीरीज में थी स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई, और बेस में देखते हुए आपको बीटा प्लस 1 का एक फैक्टर आ जाता है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल. ठीक है, दिस इज ऑलवेज ट्रू क्योंकि दिस आई बी और दिस आई ई has a relation IE divided by beta plus 1. So because of this you get R in as beta plus 1 times small re plus capital RE. So this is called the resistance reflection rule. अब नेक्स्ट टोपोलॉजी हम देख लेते हैं. नेक्स्ट टोपोलॉजी इज द कॉमन बेस टोपोलॉजी. सो कॉमन बेस के केस में ऑल्सो यहाँ पर ये रूल्स भी पॉसिबल हैं जो कि अभी इस सेमेस्टर में नहीं हम यूज़ करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में यूज़ करेंगे, कि द गेन इज माइनस अल्फा टाइम्स द टोटल रेजिस्टेंस इन कलेक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस इन एमीटर. सो ये रूल आप यूज़ कर लीजिएगा जस्ट टू चेक कि आपने कोई गलती नहीं की. अदरवाइज इट्स इम्पॉर्टेंट इन दिस करंट सेमेस्टर कि आपको इस तरीके से पूरी एनालिसिस करना आती हो और उसकी मदद से आप ये फाइनल एक्सप्रेशंस निकालें. एंड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर हम इन रूल्स को यूटिलाइज करेंगे टू डिटरमिन द एक्सप्रेशंस फॉर गेन डायरेक्टली एंड क्विकली. बट फॉर द पर्पस ऑफ करंट सेमेस्टर यू मस्ट नो हाउ टू डू द कंप्लीट एनालिसिस एंड देन डिटरमिन द फाइनल वैल्यूज. तो ये एनालिसिस करनी ज़रूरी है इस करंट सेमेस्टर में. ये डायरेक्ट रिलेशंस आपने नहीं यूज़ करनी, नेक्स्ट सेमेस्टर में इनको हम यूज़ करेंगे. So the next topology that we are interested in analyzing is the common base amplifier. So common base amplifier के case में you apply the signal source at the emitter terminal, the base is grounded in the AC equivalent circuit, and output is taken at the collector terminal. So इस case में again you can see that कि since ये AC equivalent circuit है और AC equivalent circuit में emitter terminal is not directly grounded, इंस्टेड एमीटर के ऊपर एक प्रैक्टिकल सिग्नल सोर्स कनेक्टेड है. सो टी मॉडल इज द प्रिफर्ड ऑप्शन हियर. सो अगेन टू सेव सम टाइम मैं यहाँ पर विदाउट अर्ली इफेक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ. लेकिन अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट वीक हमने एग्जांपल की थी जिसमें आपके पास कॉमन बेस एम्पलीफायर था और उसकी एनालिसिस हमने अर्ली इफेक्ट के साथ भी की थी. सो इस पर्टिकुलर सर्किट को भी आपने अर्ली इफेक्ट के साथ भी एनालाइज करने. तो थोड़े से स्टेप्स इसमें बढ़ जाएंगे बट द प्रोसीजर इज सिमिलर. एंड लास्ट वीक हमने एग्जांपल की भी थी. अभी क्लास में हम अर्ली इफेक्ट के बगैर कर रहे हैं, बट एज अ होमवर्क डू प्रैक्टिस कि अर्ली इफेक्ट के साथ क्या एडिशनल स्टेप्स करने पड़ेंगे. सो लेट मी ड्रॉ द टी मॉडल हियर. सो ये आपके पास आई ई है, पैसिव साइन कन्वेंशन है. दिस इज द कलेक्टर टर्मिनल, द बेस टर्मिनल एंड द एमीटर टर्मिनल. सो कलेक्टर के ऊपर हम देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर RC इन पैरेलल विद RL कनेक्टेड है. एमीटर के ऊपर यू हैव अ प्रैक्टिकल सिग्नल सोर्स R सिग्नल एंड V सिग्नल. कॉमन बेस टोपोलॉजी है तो एमीटर के ऊपर आप इनपुट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. तो VI इस तरीके से डिफाइंड है. आउटपुट V out इस तरीके से डिफाइंड है. बेस टर्मिनल इज ग्राउंडेड. So this is a small signal equivalent circuit that we are going to analyze and determine different node voltages and branch currents. Different gains and input resistance and the output resistance. So let's start with Rin. So Rin is Vi divided by II. So the first step is to remove this practical source and apply a test source instead. Let's call it Vi and determine the current II. So applying KCL at this node, there is one current entering the node and another also entering the node. So we have I in plus IE must be equal to 0, or I in is equal to minus IE. By Ohm's law, IE is equal to 0 minus Vi divided by
RE. So this implies I in must be equal to VI by RE, because I in is minus IE. So this implies capital R in is small r. पहली चीज हम ये नोट कर सकते हैं कि कॉमन बेस के केस में इनपुट रेजिस्टेंस इज स्मॉल. RE will be typically in ohms or tens of ohms. So RE is typically a small entity. So हम ये कह रहे हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस जो कॉमन बेस टोपोलॉजी में आई है वो एक स्मॉल वैल्यू है. So जिस तरह हमने पहले बात की है कि Rin ideally Rin should be large, ideally Rin should be infinity. So this is something undesirable. So common base has input resistance that is a small number. So next, let's analyze this circuit and determine the gain. So अब हम gain निकाल लेते हैं. So gain निकालने के लिए let's start with AB. So let's apply KCL at this node. There are two currents, both are exiting the node. So we have alpha IE plus V out over RC in parallel with RL must be equal to 0, or V out is equal to minus alpha IE times RC in parallel with RL. By Ohm's law हमने पहले भी देखा है कि IE is equal to 0 minus VI divided by RE, or minus VI by RE. So let's make this substitution here, minus alpha minus VI by RE times RC in parallel with RL, or it is equal to alpha times, or V out over VI, or AB is equal to alpha times RC in parallel with RL divided by small re. So पहली चीज हमने नोट की थी कि इनपुट रेजिस्टेंस Rin इज स्मॉल, विच इज समथिंग अनडिजायरेबल. सेकेंड चीज हम ये नोट कर रहे हैं कि द गेन इज पॉजिटिव. So it's a characteristic of common base amplifier that the gain you get is positive, or in other words output is in phase with the input. So gain is positive here. हम AV naught में निकाल सकते हैं. AV naught is just AV with RL replaced by an open circuit, and since open circuit in parallel with the RC will be just RC, so this is equal to alpha times RC divided by RE. GV is equal to V out over V signal, which can be rewritten as VI over V signal times V out over VI, or Rin divided by Rin plus R signal times AV. So सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं. Rin हम निकाल चुके हैं. Rin is RE. So this is RE divided by RE plus R signal times AV, जो हमने निकाला है alpha times RC in parallel with RL divided by RE. So this is equal to alpha times RC in parallel with RL divided by RE plus R signal. So ये आपके पास GV की एक्सप्रेशन भी आ गई. अगेन GV is also positive. So तमाम गेन्स कॉमन बेस के केस में पॉजिटिव हैं. इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस के केस में आपको स्मॉल मिलती है. कैपिटल R नॉट रह गया निकालने वाला. सो कैपिटल R नॉट निकालने के लिए लेट्स ड्रॉ द सर्किट अगेन. सो अल्फा IE, this is RE, this is IE, बेस इज ग्राउंडेड. कलेक्टर के ऊपर आपके पास RC कनेक्टेड है, ऑल्सो आपके पास RL कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपने कोई टेस्ट सोर्स VI अप्लाई किया हुआ है. सो दिस इज अ सर्किट दैट वी हैव. सो कैपिटल R नॉट के लिए क्या तरीका है? रिमूव RL. कैपिटल R नॉट के लिए रिमूव RL, अप्लाई अ टेस्ट सोर्स Vx and determine the ratio Vx by Ix, and also set Vi equal to 0. So the first step is remove this RL, and instead of this RL apply a test source
Vx, determine the current Ix and set Vi equal to 0. तो ये हमने स्टेप्स करने हैं. सो Vi इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि आपके पास ये एक रेजिस्टर स्मॉल आ रही है, इसकी ये नोड भी 0 वोल्ट पे है और ये नोड ऑलरेडी ग्राउंडेड थी, ये भी 0 वोल्ट पे है. सो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस हियर. So IE is equal to 0 minus 0 divided by RE is equal to 0. So if IE is equal to 0, that means alpha IE is equal to 0. So if alpha IE is equal to 0, that represents an open circuit. So you're just left with a circuit that has just RC connected to a source Vx. So this means R0, which is equal to Vx over Ix when Vi is equal to 0, is equal to just Rc. So this completes our analysis of this common base topology. So common base के केस में अब हमने Rin भी निकाल ली है, AV0 GV निकाल ली है और कैपिटल R0 निकाल ली है. So कैपिटल R0 हमने देखा है वो RC के इक्वल है. गेन्स हमने देखे हैं वो सारे पॉजिटिव आए हैं, which is a characteristic of common base topology. एंड Rin हमने देखा है वो स्मॉल आया. सो Rin चूंकि स्मॉल है, Rin इज जस्ट Re with and Re is typically few ohms or few tenths of ohms. So the main application of common base is at high frequencies. So common base की जो main application है लो frequencies पे नहीं है. आप उससे ऑडियो एम्पलीफायर हम नहीं प्रेफर करेंगे कि ऑडियो एम्पलीफायर बनाएं. At high frequency particularly at gigahertz range, जो आपकी तमाम इम्पीडेंस इन्वॉल्व हैं वो ऑलरेडी स्मॉल है. तो टिपिकल एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल अगर आप वाईफाई राउटर का डिज़ाइन देखें, वाईफाई राउटर के केस में टिपिकली इज ऑपरेटिंग एट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5.8 गीगाहर्ट्ज़ एंड सम एडवांस्ड राउटर्स हैव बोथ द बैंड्स कवर्ड. सो इस केस में जो इम्पीडेंसेस इन्वॉल्व होती हैं वो टिपिकली 50 ओम्स के अराउंड होती हैं. सो जो सोर्स है उसकी इम्पीडेंस 50 ओम्स होगी, जो लोड है उसकी इम्पीडेंस 50 ओम्स होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है वो 50 ओम्स होगी. तो द पॉइंट इज कि सारा सेटअप आपका 50 ओम्स पे डिजाइन होगा. तो इस किस्म की एप्लीकेशन में इट इज़ दे जो इसका डिसएडवांटेज था फॉर लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस दैट बिकम सॉर्ट ऑफ एन एडवांटेज एट हाई फ्रिक्वेंसीज बिकॉज इट इज़ डिजायर्ड के इनपुट रेजिस्टेंस उस एम्पलीफायर की स्मॉल हो, अराउंड 50 ओम्स हो, विच इज़ अचीवेबल बाय सेटिंग a suitable value of Re. So common base की जो main application है वो at high frequencies है, because high frequencies पे already तमाम system impedances are small. So this disadvantage becomes sort of something desirable at high frequencies. So similarly cable TV की application जो है उसमें भी उसमें impedances are around 75 ohms. So again common base topology is a suitable topology for these high frequency applications. So common emitter is used at low frequency applications. Common base की जो main usage है वो at high frequencies है. So ये उसका disadvantage जो है वहाँ पर instead becomes a useful feature. Next let's take a look at common collector topology. So common collector topology is also called emitter follower and its main application is as a voltage buffer. So let's define कि voltage buffer क्या चीज़ है. voltage buffer का जो main role है वो है loading effect को minimize करना. So an amplifier with the following characteristics: AV0 approaching to 1, Rin large and capital R0 small is called a voltage buffer. So voltage buffer का जो main role है, जो main need है वो है in reducing the loading effect on the signal source. So AV0 is approaching to 1, Rin is large, R0 is small. तो अभी हम common collector amplifier की analysis करेंगे and we will find out कि common collector amplifier satisfy all these three requirements.
and therefore common collector amplifier acts as a voltage buffer, and its main application is as a voltage buffer. So let's see what is the need for a voltage buffer. So let's consider this signal source. So we have a signal source with R signal of 100K and V signal of 200 millivolt, and we would like to drive this load. ये load जो है आपका it is 1K load. So 1K load को हम drive करना चाह रहे हैं इस source से. So for example, this may represent some microphone and this may represent a speaker. So this is what we need. We would like to drive the load from this source. So this way, let's examine why direct connection is not a viable option. We know कि हम directly उसको नहीं connect कर सकते, उसमें loading का effect आता है, लेकिन let's take a look कि उसमें in terms of voltage क्या होगा. So अगर हम इसको connect कर दें directly source को load के साथ, तो you can see that कि then it will just be a voltage divider, and by using voltage divider rule, V out is equal to RL divided by RL plus R signal times V signal. So RL आपके पास क्या है 1K और R signal 100K, V signal. So V signal is 200 millivolt peak. यहाँ पर जो given है हमें V signal वो आप देख सकते हैं कि वो 200 millivolt peak value है. So इस voltage divider को अगर आप compute करें तो V out की जो peak value आती है वो आती है 1.98 millivolt. So you are saying that if the input sinusoid is 200 millivolt peak signal, then the output sinusoid will just be 1.98 millivolt peak signal. So this is a very small voltage being translated across the load and is obviously not enough to drive this load. So we have a problem. आपने input signal apply किया 200 millivolts का और output पे just 1.98 millivolt translate हुआ. So this presents a problem. How to solve this problem? One solution to this problem is to utilize a voltage buffer. The voltage buffer is just an amplifier with AV naught equal to 1, R in large and capital R naught small. So हम ये कह रहे हैं कि इसको डायरेक्ट कनेक्शन करने के बजाय आप सिग्नल सोर्स को इस बफर के थ्रू कनेक्ट करें. सो बफर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? AV naught should be equal to 1, कैपिटल R naught is small जो कि इस एग्जांपल में हम 10 ohms कह रहे हैं, कैपिटल R in should be large जो कि इस एग्जांपल में हम 100K कह रहे हैं. So let's see कि इससे क्या इम्प्रूवमेंट आई है. So let's replace this symbol by the model of the amplifier and इसके एनालिसिस करके देखते हैं. So ये मॉडल है एम्पलीफायर का, रिकॉल करें ये हमने लास्ट टाइम डेवलप किया था. So let's see, पहले हम इनपुट वोल्टेज डिवाइडर का इफेक्ट देख लेते हैं, फिर हम आउटपुट का देख लेते हैं, फिर टोटल V out over V सिग्नल निकाल लेते हैं. So इनपुट वोल्टेज डिवाइडर is comprised of R in and R signal. So वो हमें बता रहा है कि VI must be equal to R in divided by R in plus R signal times V signal. Since R in हमें इस एग्जांपल में हमने 100K चूज किया हुआ है और R signal हमें 100K ही गिवन था V signal. So we are saying कि half of V signal अचीव हुआ है as VI. V signal की पीक वैल्यू 200 मिलीवोल्ट थी, तो VI की पीक वैल्यू आपके पास 100 मिलीवोल्ट आ गई. ठीक है, ये आपके पास VI की पीक वैल्यू आ गई. तो वी आर सेइंग कि VI की पीक वैल्यू इज 100 मिलीवोल्ट. लेट्स नाउ एनालाइज द आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर. तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर क्या कह रहा है? V out is equal to RL divided by RL plus R naught times AV naught VI. So RL इस एग्जांपल में 1K, कैपिटल R naught इस एग्जांपल में हमें 10 ohms दिया गया है, AV naught हम कह रहे हैं 1 होगा, VI हम कह रहे हैं कि उसकी पीक वैल्यू इज 100 मिली. सो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप 1K को 1K प्लस 10 से अगर आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाता है 99.01 मिलीवोल्ट.
So this is what we're saying. We're saying कि इस वक्त situation has much improved relative to the direct connection. और direct connection में आपके पास just 2 millivolt output पे translate हुए थे. इस वक्त situation has much improved. और output पे जो value आपकी translate हुई है voltage की, that is equal to 99 millivolts. So input was 200 millivolt peak signal and output is 99 millivolt peak signal. So some deterioration is still there, but the situation has much improved relative to the direct connection. And इस situation को मज़ीद improve भी किया जा सकता है अगर हम Rin को larger रख सकें, Rin को further larger रख सकें. अभी 100K रखा था, इससे मज़ीद आप अगर large कर सकें तो the situation will improve further. Situation को further improvement की जा सकती है by increasing the value of Rin. So इस किस्म के सर्किट को हम वोल्टेज बफर कहते हैं. वोल्टेज बफर के केस में आप देख सकते हैं कि गेन AV0 is 1. So strictly speaking, it's not an amplifier, but it can still be treated as a special case of amplifier. So this sort of voltage buffer is required where gain is already enough. आपको मजीद गेन नहीं चाहिए, आपने just loading के इफेक्ट को minimize करना है. So यहाँ पर loading के इफेक्ट को minimize कर देगा because Rin is small or output will become closer to the signal value. So इस केस में V out is 99 millivolt peak value, while a V signal was 200 millivolt. So सर ये जो जी सर ये जो लोडिंग का इफेक्ट है ये हम वोल्टेज रेगुलेटर से नहीं मिनिमाइज कर सकते? वोल्टेज रेगुलेटर तो आपके पास डीसी के लिए होता है ना. वोल्टेज रेगुलेटर तो जस्ट डीसी के लिए है. ये तो हम ये जो वी सिग्नल आपने अप्लाई किया है एसी सिग्नल है, कोई एसी वेरिएशन है, ये इट्स अ साइनसॉइड. सो वोल्टेज रेगुलेटर इज टू इंश्योर कि आपके पास एक डीसी फिक्स्ड वोल्टेज विद वेरी स्मॉल वेरिएशंस आप अचीव कर सकें. यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. आप ये कह रहे हैं कि सिग्नल सोर्स को फॉर एग्जांपल जो माइक्रोफोन है उसको लोड ना करे और वो सिग्नल आउटपुट पे जो आपका लोड है फॉर एग्जांपल जो स्पीकर है उसको ड्राइव कर सके. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड एन एम्पलीफायर. सो यहाँ पर ये वी सिग्नल इज सम AC वेरिएशन, some sinusoid, and output is also some AC signal, some sinusoid. Okay, sir. Okay. So we are saying that a voltage buffer is an amplifier with these three characteristics. AV0 must be approaching to 1, Rin must be as large as possible, and capital R0 must be as small as possible. तो ये अगर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कोई सर्किट है जो सेटिस्फाई करता है, उसका गेन AV0 इज अप्रोचिंग टू 1, Rn इज लार्ज एंड कैपिटल R0 इज स्मॉल, तो उसको हम वोल्टेज बफर कहेंगे. एंड देन दैट कैन बी यूज्ड टू मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द प्रोवाइडेड सिग्नल सोर्स. तो ये उन एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे जहाँ पर गेन इज ऑलरेडी इनफ, सिग्नल स्ट्रेंथ ऑलरेडी है हमारे पास, हमने जस्ट लोडिंग के इफेक्ट को मिनिमाइज करना है. एंड बिकॉज ऑफ लार्ज Rin यहाँ पर ये सोर्स से काफ़ी कम करंट उसको ड्रॉ करना पड़ेगा. सो दैट विल बी एन एडवांटेज. सो अभी हम एनालिसिस करेंगे कॉमन कलेक्टर की एंड विल सी कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सेटिस्फाई ऑल दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. सो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की जब हम एनालिसिस करेंगे तो विल फाइंड आउट कि AV0 is approaching to 1, Rin is large and capital R0 is small. So we will conclude that the common collector amplifier is a voltage buffer. So ये आपके पास common collector amplifier के लिए AC equivalent circuit है and इसकी analysis करने के बाद we'll find out कि इस केस में AV0 is approaching to 1, Rin is large and capital R0 is small. So इसकी analysis हम कल करेंगे. And we will find out it satisfy all these three features, and we will be able to conclude that a common collector amplifier is actually an implementation of a voltage buffer. So common collector amplifier आपको as such gain नहीं देगा, it will implement a voltage buffer and will be utilized where loading effect has to be minimized. So we will continue this tomorrow.
तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड विल एनालाइज दिस सर्किट एंड आफ्टर दिस एनालिसिस विल मेक अ we will compare these amplifier topologies and then we will shift to the practical biasing schemes कि practical DC biasing आप किस तरीके से करते हैं, वो इसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे. So we'll end the today's lecture here और tomorrow हम यहाँ से चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. Any questions? सर ये जो हमने एम्पलीफायर पढ़ा है कॉमन एमिटर विद आर ई, इसके अंदर हमारे पास आर इन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो गेन है वो डिक्रीज हो रही है. जी जी. तो सर ये जो जी वी है इस पे क्या क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कॉमन कलेक्टर के केस में कह रहे हैं? नहीं सर, कॉमन एमिटर विद आर ई, क्योंकि जो जी वी है वो तो ए वी और आर इन दोनों पे डिपेंडेंट है. जी बिल्कुल. एवी के केस में भी आर इन की वजह से यानी इनपुट वोल्टेज डिवाइडर की वजह से तो इफेक्ट उसका काफ़ी कम आएगा. लेकिन चूंकि एवी कम हो रहा है तो जीवी भी आपको रिलेटिवली आपको थोड़ा कम ही मिलेगा इस केस में. जीवी की एक्सप्रेशन हमने निकाली थी. लेट मी गेट बैक देयर. जी ये आपके पास जीवी की एक्सप्रेशन है. तो यस यू कैन से दैट कि इसका इफेक्ट जो है इसका इफेक्ट हमने यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया. दिस टर्म विल हैव अ स्मॉलर इफेक्ट बिकॉज आर इन इज क्वाइट लार्ज. हाउएवर ये आपके पास स्मॉल हो गया है. तो ओवरऑल अगर आपने कंपैरिजन करना है इसका कॉमन एमीटर के साथ या कॉमन एमीटर के साथ, तो उसके लिए तो हमें कुछ वैल्यूज को कंप्यूट करना पड़ेगा एंड देन वी कैन मेक अ कंपैरिजन कि ओवरऑल जीवी को किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है इन दिस टोपोलॉजी कॉमन एमीटर विद आर ई विद कॉमन एमीटर टोपोलॉजी. लेकिन ओवरऑल आर इन यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है. लेकिन जीवी का कंपैरिजन फिर वी हैव टू हैव सम वैल्यूज. इसमें अगर सर्किट की वैल्यूज हों तो देन वी कैन मेक अ प्रॉपर कंपैरिजन के जीवी ऑफ कॉमन एमीटर विद आर ई का क्या कंपैरिजन है फॉर जीवी ऑफ कॉमन एमीटर. तो उसके लिए प्रॉपर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देन वी कैन मेक दैट कंपैरिजन. तो ओके सर. ठीक है ना. यानी एग्जैक्ट अगर कंपैरिजन करना है तो फिर तो हमें वैल्यूज चाहिए ना. अभी तो हमने जनरल उसका ट्रेंड देखा है क्योंकि हमने वैल्यूज के बगैर इसे देखा है. लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट कंपैरिजन करना है कि आर इन में तो हमें नज़र आ रहा है कि आर इन के केस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ओवरऑल जीवी का क्या कंपैरिजन है, तो देन वी मस्ट हैव द वैल्यूज अवेलेबल टू अस कि स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर्स की क्या वैल्यू है, सर्किट के तमाम रेजिस्टर्स की क्या वैल्यू है, एंड देन वी कैन हैव अ टेंजिबल कंपैरिजन के किस तरीके से जीवी कंपेयर कर रहे हैं फॉर सी ई विद आर ई विद दैट ऑफ कॉमन एमीटर. जी ठीक है. यस सर. जी कोई और क्वेश्चन हो, कोई और पॉइंट डिस्कस करना हो?